In this video, we are going to see that functions in C. Now, the first things we are going to see is what is a function and then the why use function. There are some more headings which we are going to see in our next slides, in our next videos. So stay tuned and let's start this video. So, knowingly or unknowingly, we rely on so many persons for so many things, right? Man is an intelligent species, but still cannot perform all of life's tasks all alone. Yes, it's definitely true. He has to rely on others. You may call a mechanic to fix up your bike, hire a gardener to mow your lawn, or rely on a store to supply you groceries every month. A computer program finds itself in a similar situation. It cannot handle all the tasks by itself. Instead, it requests other programs like entities called functions in C to get its tasks done. In this chapter, even in this video, we will study about these functions. We'll look at the variety of features of these functions, starting with the simplest one and then working towards those that demonstrate the power of C function, and those will come in our next videos as we will move further slow by slow, because if I will make videos so longer, then half of the audience will not watch because of the time. Yeah, if I got this correct, let me know in the comment section. So what is the first thing is what is a function? A function is a self-contained block of statement that perform a coherent task of some kind. Every C program can be thought of as a collection of these functions. As we noted earlier, using a function is something like hiring a person to do a specific job for you. Sometimes the interaction with this person is very simple, sometimes it's complex, right? Now, suppose you have a task that is always performed exactly in the same way. Say a bi-monthly servicing of your motorbike. When you want it to be done, you go to the service station and say, it's time, do it now, right? You don't need to give instruction because the mechanic knows his job. You don't need to be told when the job is done. You assume the bike would be serviced in the usual way, the mechanic does it, and that's it, right? Let us now look at the simple C function that operates in much the same way as the mechanic. Actually, we will be looking at two things: a function that calls or activates the function and the function itself. So function calling is one of the most important thing. So here our function, this main, starts, and this is the main block, right? In main block we are having a message box, message function. Now what is the way to identify it is a function is it is having a name and then the braces and then semicolon, right? So this is the function declaration. So in this, after this, we are printing cry and you stop the monotony, right? Then after main we are writing message. Then in this we are printing smile and the world smiles with you. So I have already put the output here that smile will first come, but how? Let's see what is happening here. Let me pick the pen or laser pointer. So from here we are calling a message function. Main has been started, then this line has been executed, and on executing this line we have moved from here to here. Then we are going to inside this message function, then we are seeing what all are the statements here. Then we are finding this printf statement, we are printing this statement. If we will find this scanf statement or any other statement, we would have executed that statement. Then after completing this block, we are coming back towards this message. From where we have jumped towards this block, we have come again back. So now we are here after printing this smile and the world smiles with you. Then
Then the next line is printf cry and you stop the monotony, right? So we are printing this line. So from here we can understood that functions can help to jump from one place to another. Yeah. So let's see more or other examples in next videos or in upcoming videos. And let's see the next slide. So from those example or the functions program which we will be doing in our next videos, we can draw on some conclusions. And what are those? Any C program contains at least one function. ओके, कोई भी आपका सी का प्रोग्राम जो भी होगा वो एक फंक्शन रखेगा ही रखेगा. अब now that function could be your main function because main is also a function, right? And every program starts from the main, right? So if a program contains only one function, it must be main, right? Which I have told you. If a C program contains more than one function, then one of these functions must be main because main is the head, because program executes always begins with main, right? Whenever we are going to run our program, the main block is going to run default. Our program starts from the main. The main part is our main function only. Okay, there is no limit on the number of functions that might be present in a C program. It means that you can have as much as you want the functions. Okay, it is not depending on any number limitation that you have to have only one function or two function or three function. You can have as much as you want. And why we want functions? To we want functions to enhance the appearance of the function, that or to that it can be understandable by every person, right? Each function in a program is called in the sequence specified by the function calls in main. Now see what is function calls, right? This message, then parenthesis, and then this semicolon is called a function call. Okay, so from here we are calling this function message, right? So after each function has done its thing, control returns to the main. When main runs out of the function calls, the program ends, right? Which I have told you earlier also. This is the same thing. Then next we come to why use functions. The point I have told you in this point, that why we use function, because of the good layout, good design, or good understandable. We are going to talk about those two features only in this point and in this point. Let's see what are those. So two reasons are: writing functions avoids rewriting the same code over and over. क्योंकि जब भी आपका एक कोड लिखा है तो फंक्शंस, सपोज आपका एक सम निकालने का कोड है और आपको हर बार सम निकालना है, सम a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी करके, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आपको हर बार में तो सम ऐसे नहीं लिखोगे ना कि सपोज आपको 10 डिजिट्स 10 नंबर दे रखे हैं और उन 10 नंबर को 5 जगह डिवाइड कर दिया और उनका आपको सम निकालना है, ठीक है? सपोज किस तरह से करें, 1 2, या चलिए यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी. यहाँ पे 1 2, ठीक, फिर आते हैं हमारे 3, फिर आते हैं हमारा 4, राइट, फिर आते हैं हमारा 5, फिर आते हैं हमारा 6, फिर आते हैं हमारा 7, फिर आते हैं हमारा 8, फिर आते हैं हमारा 9, फिर आते हैं हमारा 10. So we were having these 10 numbers, right? And now we have divided these 10 numbers in 5 groups of 2, right? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and we want the sum of these sum of these numbers to be equal to, and we should print the answer, right? Like 3. So it's a good habit कि हम एक फंक्शन बनाएं
ठीक है, हम फंक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर हमारा सम का एक वेरिएबल बैठा होगा जो कि हमारे को सम करेगा a प्लस बी, राइट। देन हम प्रिंट कर देंगे, किसको प्रिंट करेंगे, सम को। अब नाउ इतना तो हमें अंडरस्टूड हो गया कि सम हमें प्रिंट करना है और सम कैसे कैलकुलेट होगा, a प्लस बी से। बट इतना हमें नहीं पता चला है कि ये a प्लस बी आएंगे कैसे। तो a प्लस बी आएंगे हमारे यहाँ से, यहाँ पे हमारा होगा इंट a और यहाँ पे होगा हमारा इंट b, राइट। तो इंट a और इंट b तो यहाँ पे हमारा हो गया है। अब ये इंट a और इंट b इस चीज़ के लिए, इस फंक्शन के लिए, बट हमारे पास इंट a और इंट b की वैल्यू कहाँ जाएगी, हमें ये पास कराने पड़ेंगे, राइट। तो जो हमारा मेन होगा, मेन सपोज हमारे यहाँ पे है, अभी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मेन के अंदर हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे, सपोज हमने सम डाला है और उसमें लिखना है 1, 2, तो ये वैल्यूज जो है हमारी यहाँ से जंप होके आई है कहाँ पे, इधर, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया हमारा 1, यहाँ पे आ गया हमारा 2, तो टोटल वैल्यू 3 प्रिंट कर दिया हमने 3, ठीक है। अभी सपोज हमें दोबारा से 3 4 करना है, अभी विद हम क्या करेंगे, फंक्शन में यहाँ पे करा सम, अगर आप लोगों को ये पार्ट पता है तो आप आगे मूव कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ बहुत सारे लोग होते हैं जिनको फंक्शन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती, तो इसलिए उन्हीं के लिए बेसिक पार्ट है, ओके। सो अब हमें सम 3,4 ये मेन के अंदर लिख रहे हैं हम, सम 1,2 सम 3,4। अब सम 3,4 यहाँ पे आके 3 और 4 यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा 4, 3 + 4 हो जाएगा हमारा 7, तो फिर ये 7 प्रिंट कर देगा। तो इसी तरीके से हम सब नंबर के लिए कर सकते हैं, राइट। बट अगर हम ऐसे ना करते तो दूसरा मेथड क्या था, ये जो हमारा मेन था इसकी जगह हमें पूरा कोड ये वाला लिखना पड़ता। कितनी बार, 5 बार, क्योंकि हमें एक बार इसका निकालना है, 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 राइट। तो इस तरह से हमें यही कोड सेम 5 बार लिखना पड़ता, तब जाके हम सॉल्व कर पाते। अभी हमने क्या करा, ये कोड एक ही बार लिखा है और हमने 5 फंक्शन कॉल कर दिया, तो उससे क्या हुआ, हमारा पर्पज सॉल्व हो गया। तो जो ये है, ये इसका इस लाइन का मतलब हमारा यही था, writing function avoids rewriting the same code over and over. Suppose you have a section of code in your program suppose you have a section of code in your program that calculates area of a triangle. Now they have taken the example of the area of triangle. I have explained you with the sum, right? If later in that program you want to calculate the area of a different triangle, you won't like it if you are required to write the same instruction all over again. Instead, you would prefer to jump to a section of code that calculates area and then jump back to the place from where you left off. This section of code is nothing but a function. And now suppose, see, I have asked you to calculate the sum, and now I am asking you to calculate the difference. Now what the changes you have to make? Now that thing only they have explained in triangle example, which is little bit typical because half of the student confused with the triangle and rectangle. So they must be thinking of the rectangle area. So without wasting time there, I am just asking you, if we have to find the difference of A and B, then what we have to do? We will simply change our plus sign towards the negative sign. That will give us A minus B. A minus B is -1, it will give us -1. That change only we have to make. So
इसी तरह से वो बता देते हैं हमें ट्राइंगल में। अगर ट्राइंगल हमें डिफरेंट एक का हमने कैलकुलेट करा हुआ है, अभी जिसकी तीनों साइड डिफरेंट है उसका कैलकुलेट करना है, तो सिर्फ हम किस में चेंजेस करेंगे, जो हमारे ट्राइंगल का एरिया निकालने का ब्लॉक था सिर्फ उसमें, राइट। तो इसी तरीके से हम सिर्फ डिफरेंस जिसमें निकालना है हम भी उसी में चेंजेस करेंगे, तो हमारा डिफरेंस बन जाएगा। अगर सपोज आप देखो, अगर हमने a प्लस बी की स्टेटमेंट यहाँ पे सम की जगह लिखी होती, सम इक्वल टू ए प्लस बी, सम इक्वल टू ए प्लस बी, सम इक्वल टू ए प्लस बी 5 बार, तो हमें 5 बार साइन चेंज करने पड़ते हैं माइनस, है ना। अभी यहाँ पे हमने एक ही बार लिखा तो एक ही बार चेंज करना पड़ रहा है, तो ये क्या होता है, ये एफिशिएंट होता है। सपोज हमें किसी भी फंक्शन में कुछ चेंजेस करने होते हैं या किसी प्रोग्राम के पार्ट में कुछ चेंजेस करते हैं, अगर वो हम उस पार्ट का हमने फंक्शन बना रखा है, तो हम पूरा प्रोग्राम 100 लाइन के देखने के बजाय सिर्फ 10 लाइन के कोड को हम देख सकते हैं। तो इसलिए हमें फंक्शन यूज करना ज़्यादा बेटर रहता है। अभी हम देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट, यूजिंग फंक्शन इट बिकम्स इजियर टू राइट प्रोग्राम्स एंड कीप ट्रैक ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। If the operation of a program can be divided into separate activities and each activity placed in a different function, then each could be written and checked more or less independently. Separating the code into modular functions also makes the program easier to design and understand. So, अगर हमारा प्रोग्राम 100 लाइन का है और उसको हमने 10-10 की लाइन में फंक्शन के थ्रू बांटा हुआ है, तो देखिए हर 10 लाइन का मतलब भी हमने लिखा होगा कमेंट के थ्रू, तो वो समझ में भी आ रहा होगा। डिज़ाइन एक उसको अलग से स्ट्रक्चर भी मिल चुका होगा, इंडेंटेशन, तो हमें देखने में भी अच्छा लग रहा होगा। एंड ऑफकोर्स जब देखने में अच्छा तो वो अंडरस्टैंडेबल होगा। और कोड ऐसा होना चाहिए कि आपने बनाया तो 10 लोग अगर उसको पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ के समझ सके, ऐसा ना हो कि सिर्फ आप ही को समझ में आ रहा हो। तो इसलिए हम फंक्शंस का ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए और डिज़ाइन देने के लिए और अपनी ईज को ईजी रखने के लिए। सो आज आपने इस वीडियो में देखा है व्हाट इज़ अ फंक्शन एंड व्हाई यूज फंक्शन। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ऑफकोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। With